नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और अब जब हम तैयारी कर रहे हैं नए साल का स्वागत करने के लिए तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये है कि इस नए साल को हम सुंदर कैसे बनाएं और सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है कि आप स्वस्थ रहें एंड स्पेशली एज वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू वेलकम 2016 I have the distinct pleasure of welcoming Dr. Abhay Malhotra to our studios. नमस्कार। So डॉक्टर साहब, एज आई वेलकम यू, हार्ट और दिल में क्या अंतर होता है? जब हम कहते हैं कि यार दिल है, और कई लोग अभी दिल वालों की बातें करते करते थकते नहीं हैं, बट इज देयर समथिंग लाइक दिल इन बायोलॉजिकली, और हम कई बार इंटरचेंज समझ लेते हैं कि हार्ट और दिल एक ही। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं हार्ट जो है इट इज़ एन ऑर्गन, सो वी आर टॉकिंग मोर इन मेडिकल फील्ड, एनाटॉमिकली व्हाट इट इज़। तो दिल जो है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में चला जाता है। इट्स लाइक योर माइंड, व्हाट यू थिंक, सो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पर हार्ट बेसिकली जो हम कह रहे हैं इट्स बेसिकली मोर रिलेटेड टू ऑर्गन एंड that is the pump of the body and which keeps us all alive. So before we talk about heart disease, which is what we want to learn from you, tell us a little bit about the functioning of the heart. Of course, हम सबके पास heart है, heart beat important है, but essentially what is it that heart is doing? जैसे आपने कहा अशोक जी, heart is the biggest and the most efficient pump ever seen. This is, I believe, it's a God creation. आप ये देखें कि heart pumps trillion times during the lifetime और ये कभी भी थकता नहीं है. You know, it keeps on going, keeps on going. So it's all the more reason it's responsibility on us so that we keep our heart healthy. Every organ in the body requires blood supply, requires nutrients and oxygen. तो हार्ट का फंक्शन ये होता है कि वो पंप करता है ब्लड को so that it reaches all the organs so that all the organs function properly. So it is the best pump of the heart, of the body. So pump शब्द में उतना मजा नहीं था, हार्ट में ज़्यादा मजा है, but what takes away और मजा is the reference of heart disease. and क्या हार्ट डिजीज़ है किसी को तो हमें चिंता होने लग जाती है कि कुछ हो ना जाए. सो लेट्स लर्न फ्रॉम यू डॉक्टर अभय, व्हाट इज इट दैट वी आर रेफरिंग टू व्हेन वी से कि हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि कई चीज़ें हो सकती होंगी. दैट्स ट्रू. हार्ट डिजीज़ कॉमनली हम कहते हैं कि मुझे हार्ट डिजीज़ हो गया, तो उसमें बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं. आई कैन पॉइंट टू यू ओवर हियर. ये जो मेरे पास है ये हार्ट का एक छोटा सा मॉडल है एंड एज यू कैन सी हियर these are the blood vessels, arteries which run on the surface of the heart. वो जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जी जी, तो ये जो आर्टरीज हैं ये सप्लाई करते हैं ब्लड हार्ट को, बिकॉज हार्ट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन एंड नीड सम ऑक्सीजन टू वर्क विद. So when these arteries or blood vessels get clogged, we call it as a coronary artery disease. वो basically is commonly known as a heart disease. तो heart disease और भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम हार्ट को खोल के देखें तो हार्ट के अंदर जो हैं, as we know there are 4 chambers and there are some valves inside the heart also. But just say, you know, we commonly say what the heart disease is. We are talking about the blockage of the heart arteries which run on the surface of the heart. So जब ये heart की arteries clog होती हैं, then you get the problems. That's basically we call it as a heart disease. So before we talk further, just as a child I sometimes have these questions. We are talking about heart being the great pump that we have, and throughout our lives trillions of times pumping as you mentioned. तो blood supply ये करता है, तो इसके पास blood आता कहाँ से? Do we make blood in our body or? In our blood vessels we have close to 5 liters of blood which is circulating in the body, and heart helps us to circulate that blood. It receives the blood which lacks oxygen, it goes to the lungs and lungs purify the
blood, send it back to the heart, and heart send it to the body. So that's how it basically works. So as you can say, God ने हमें 5 liter blood दिया हुआ है, which basically all the blood cells come from bone marrow, is one of the tissue in the bone which generates red blood cells and all that. तो वो जो blood है 5 लीटर वो circulate करता रहता है. तो बच्चा है जब भी 5 लीटर होता है, बड़ा है जब भी 5 लीटर? It actually, the volume does increase with age though, but once you reach adult age, then it is close to 4.5 to 5 liters. So wonderful. What we find very scary word is heart attack. And when I'm talking to you at the moment, without any tension, but if there is anyone who have experienced someone near and dear who has been affected by heart disease that was fatal, तो हार्ट अटैक हमें बहुत ही बुरा लगता है. एंड वन वुड लाइक दैट किसी को हार्ट अटैक हो नहीं. तो पहले समझें कि वाई हार्ट अटैक. That's right, Ashok ji. Heart attack basically happens. If I may have the slide, please. Second slide. So there's an artery. Yeah. हाँ जी, जैसे आप ये स्लाइड में देख सकते हैं, एक तो है आर्टरी विच इज़ शोइंग द नॉर्मल ब्लड फ्लो. ये आर्टरी का अंदर से कट सेक्शन है, वॉल है, एंड देयर इज़ अ ल्यूमेन. राइट साइड पे आप देखेंगे कि जो आर्टरी है उसमें येलो येलो जो स्टफ है, दैट इज़ बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग. जो कोलेस्ट्रॉल है वो बिल्डअप होता रहता है इन द आर्टरी, एंड दैट्स हाउ द आर्टरी गेट्स क्लॉग्ड. इसे हम कोलेस्ट्रॉल प्लैक भी कह देते हैं. सो बेसिकली जैसे रिस्क फैक्टर है कि ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल है, दोज कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स गेट accumulated in the wall of the artery and they form a plaque, जिसे हम लिपिड प्लैक भी कहते हैं. सो इससे क्या होता है कि जो ल्यूमेन है ब्लड वेसल का वो नैरो डाउन हो जाता है. सो when the blood vessels get narrowed down, the blood does not flow well through that blocked artery. That's when you start getting symptoms of angina. We call it as chest pain and all that. और जब ये blockage होता है, it becomes 100% blocked. So what happens is one of the जो plaque है वो rupture करता है, then it accumulates all the blood cells and it becomes 100% blocked. That's when the blood supply to the heart is totally cut off, and that's when you get heart attacks. So now this blockage, why it happens? There are many risk factors why blockage can happen. Anybody who has a high blood pressure, जिसे हम hypertension भी कहते हैं, जिसमें उनका systolic या diastolic blood pressure high हो, या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो, जिसे हम हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं, उसमें आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, विच हैज़ अ हाई चांसेस ऑफ गेटिंग डिपॉजिटेड इन द आर्टरी. तीसरा रिस्क फैक्टर जो है विच इज़ नोन एज डायबिटीज़, उसमें आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी हाई होता है. दैट ऑल्सो एक्सेलरेट्स द प्रोसेस वेयर कोलेस्ट्रॉल कैन गेट बिल्ट अप इन द कोरोनरी आर्टरीज and can cause blockage of the arteries. So now as we are talking about the risk factors which leads to this situation कि ये blockage हो गया, before we talk about the risk factors, आपने कहा कि 100% तक block हो जाता है, तो is there any way that one would be able to detect कि यार ये कुछ blockage होना शुरू हुआ या पूरा 80-90% होने के बाद ही मालूम पड़ता है? Very good question, Ashok ji. Once the blockage comes to a point, for example, अगर blockage 20 या 30% blockage है, वो कोई symptoms नहीं cause करेगा, and if it gradually increases and becomes, let's say, 80 or 90% blockage, that's when your oxygen supply to the heart is less and you get symptoms from it in the form of chest pain, या फिर आपको difficulty in breathing होनी शुरू हो जाती है, or your effort tolerance, your exercise capacity goes down. These are the signs telling that heart is really hungry for the blood and we got to do something about it. So at that point, if you have these symptoms, it's always good idea to go and talk to your physician, and we can then do some testing to make sure that you don't have any tight or critical blockage sitting there.
So now let's talk a little bit more about the risk factors कि क्यों हो जाता है ब्लॉकेज. इज इट समथिंग कि भाई मेरे फैमिली में ऐसा रहा है, हेरिडिटरी है, या मेरी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी बातें हैं? That's right. एक तो हमने अभी बात करी थी कि हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ रिस्क फैक्टर, हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ अ रिस्क फैक्टर, diabetes is a risk factor. Along with that, there are certain lifestyle patterns which makes you more prone to get heart attack. उसमें एक तो होता है smoking. It's a very major risk factor, which is actually in our hands. So once we quit smoking, your risk of heart attack will go down. So let me interrupt Dr. Sahab here for a quick second. As we are entering into a new year, and this is the time when some of you are thinking about New Year resolutions, so this particular reference that is coming up has potential pointers for the kind of resolutions that you may have. So smoking, if that is a part of your lifestyle, it is a good time to think in the light of what he is saying. अगर आप स्मोकर हैं तो चांसेस कि हार्ट डिजीज ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा हो जाते हैं. राइट, ज़्यादा हो जाता है. और ये भी माना गया है कि जब हार्ट डिजीज़ हो जाए उसमें मॉर्टेलिटी, उसमें डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं जो दोज हु आर स्मोकर. और अगर आप ब्लॉकेज को खोल भी देते हैं स्टेंट डाल के, अगर आप स्मोकिंग कंटिन्यू करेंगे तो वो स्टेंट को दोबारा ब्लॉकेज होने का चांसेस होता है. अच्छा, बहुत ब्रीफली अगर आप बताएं कि स्मोक करने वाला जो है तो उसके हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ क्यों जाता है? वो जो निकोटीन है ना जी, एंड देयर आर अदर वेरी टॉक्सिक केमिकल्स व्हेन यू इनहेल along with nicotine, which helps to oxidize cholesterol particles, और वो फिर ज़्यादा डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं. सो बेसिकली दैट्स व्हाट बेसिकली इट इज़. और जब आप स्मोकिंग बंद कर दें, अगले 3-4 साल में आपका जो रिस्क है हार्ट डिजीज़ होने का वो कम हो जाता है. इट डज नॉट गो बैक टू नॉर्मल बट इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस. सो डजंट मैटर इफ यू आर स्मोकिंग, the best thing would be to quit smoking, and as Ashok ji said, it should be your New Year's resolution that you're going to quit smoking. So talking about New Year resolutions, there could be some more pointers related to the risk factors. What else would you Second say? thing which is nowadays we see very commonly is certain type of personalities have higher chances of developing coronary artery disease or heart disease. उसमें एक तो है जो टाइप ए पर्सनैलिटीज़ होती हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव. एग्रेशन इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट. सेकेंड थिंग इज़ दोज हु आर स्ट्रेस्ड आउट ऑल द टाइम. देयर आर मैनी स्टडीज विच हैव शोन stress is also a significant contributory factor for developing blockages and for developing heart attacks and all that. So these two things. So here let me interrupt Dr. Abhay. He is very good with lot of store of jokes also. तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए आपको कुछ न कुछ ऐसे दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए कि आप कुछ जोक सुन सकें, कुछ जोक सुना सकें. एंड इन जनरल द काइंड ऑफ अप्रोच दैट यू हैव टुवर्ड्स लाइफ कि आप कहते हैं कि भाई दिल पे मत ले यार, तो आप हर एक बात को दिल पर ले लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं. तो ये जो एक टाइप ए पर्सनैलिटी आपने कहा, तो टाइप ए वन इज बॉर्न की कोई ठप्पा लगा हुआ है कि भाई ये टाइप ए का है और यू कैन चेंज कि नहीं भाई मैं तो बी हूँ? Well, some of it is genetic component also, but most of it is what you acquire during your lifestyle, and you know, to some extent you can change it. तो definitely कोशिश करनी चाहिए that you should not be a type A personalities because that can cause problems too. So now this might not be within the preview of what we are discussing, लेकिन ये जो type A और aggressiveness है, वो जो competitive world in which we are living, many times you are encouraged कि you should be aggressive, be a go getter. तो ये लोग go getter जो होगा वो तो कहीं ना कहीं aggressive उसमें touch आना. Absolutely. I mean, this is the world we are living in, and everybody is very competitive, which is very good actually. पर मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि ठीक है अपना काम करो, स्ट्रेस है दैट्स फाइन,
दिन में आधा घंटा निकालो, do some yoga, do some meditation, which is gonna help you calm down. You know, rather than taking medications, do that. That'll help you too. Talking about another risk factor, you said 3 risk factors mainly. Smoking एक हो गया, दूसरा stress free रहने की Type A approach है. personalities, and then obesity is also a major risk factor. जो अपने खाने का ध्यान नहीं रखते, they are overweight, they are obese, and physical inactivity. This also is a risk factor to develop coronary artery disease. उनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि डायबिटीज़ भी उनमें ज़्यादा होएगी, ब्लड शुगर ज़्यादा होएगी, हाइपरटेंशन उनमें ज़्यादा होएगी. सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड. अगर आप ओबीज़ हैं तो चांसेस आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड शुगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एंड हायर चांसेस ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज एंड ऑल दैट. तो मैं डॉक्टर साहब को इंटरप्ट रादर इन कंटिन्यूएशन व्हाट ही वाज सेइंग, ओबेसिटी ऐसी चीज़ है कि हमको पता तो होता है, फिर भी हम उसको इग्नोर करते रहते हैं. एंड देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस अनटिल अनलेस देयर इज समथिंग नॉकिंग कि नहीं यार अब तो ध्यान रखना ही पड़ेगा. I would put myself also in the category of those people who think कि यार कल से वॉक करना शुरू कर देंगे, कल से योग करना शुरू कर देंगे. जब तक फिजिकली कोई डायरेक्ट ऐसा चैलेंज नहीं आता जो आपको डॉक्टर के कमरे में बैठ के उसके मुंह से ये सुनवा दे कि आप ये करो, तब तक हम सीरियसली लेते नहीं. तो ऐसा आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारे सुनने वाले आपकी बात को दे स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली बिफोर रीचिंग टू दैट स्टेज? पहले तो मुझे वो रात इंदौरी साहब की शायरी एक याद आ गई. जैसे आप एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, तो एक जो आदमी जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उनके घुटने ख़राब हैं, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि आईना ये गर्द गर्द कैसा है, आईना ये गर्द गर्द कैसा है, चेहरे का ये रंग सर्द कैसा है, जब काम ही नहीं लिया घुटनों से सारी उम्र तो ये घुटनों का दर्द कैसा है. तो बिफोर इट इज़ लेट इट्स बेटर टू डू एक्सरसाइज. उसमें भी जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस कहती हैं, यू हैव टू जस्ट डू 20-25 minutes of exercise 5 days a week. That's all what basically you need. Doesn't have to be very strenuous exercise. Even simple walking is fine. But daily activity or 5 days a week, you should do it. And earlier you do, better it is. अच्छा, तो डॉक्टर साहब समय की सीमा को देखते हुए कई बार ऐसा होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक हुआ और पता ही नहीं चला. तो ये क्या तरीका हो कि पता लग जाए? ऐसे न केवल खुद को पता नहीं लगता है, आसपास वालों को भी पता नहीं लगता है कि वो कहते हैं कमर में दर्द था, लेकिन वो बाद में कहते हैं कमर में दर्द था लेकिन वो तो हार्ट अटैक हो रहा था. हाँ जी, वो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. एज वी फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट हार्ट डिजीज़ इज़ द नंबर 1 किलर इन अमेरिका एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो समटाइम्स जब हार्ट की आर्टरी टोटली ब्लॉक होती है, दैट्स व्हेन हार्ट अटैक्स हैपन. अनफॉर्चुनेटली सडन कार्डियक डेथ इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक. कई लोगों को बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो जब एकदम से हार्ट अटैक होता है, उनके जो हार्ट के मसल में शॉर्ट सर्किटिंग टाइप हो जाता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, दैट कैन लीड टू फेटल अरिथमियाज, जिसे हम हार्ट की रिदम प्रॉब्लम कहते हैं, and people can suddenly die from it. So this is a very unfortunate situation. That could be the first presentation. You don't have symptoms at all, but suddenly they can die from it. So it does happen. However, it is not very common, and most of the time, if we take prevention and do appropriate treatment, you can save lives. So it is good to save lives. सबसे पहले तो खुद का जीवन सुरक्षित रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो इफ देर आर सम सिम्टम्स विच लीड्स यू टू थिंक कि शायद मुझे या जिसको हो रहा है इनको हार्ट अटैक हो रहा होगा, तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? पहले तो मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ जी कि व्हाट आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक और एंजाइना पेन. सो इफ़ यू कैन पुट अप दैट स्लाइड ऑफ द सिम्टम्स. तो उसमें 2 चीज़ें हैं. अब जैसे लोग कहते हैं कि चेस्ट पेन, तो उनको छाती में कोई पेन नहीं होता. इट इज़ मोर लाइक यू हैव टू लुक फॉर चेस्ट टाइटनेस, लाइक somebody squeezing the chest, somebody squeezing the chest. और उसके साथ जो पेन है छाती में, that can radiate to your jaw, that can also radiate to the shoulder, to your left arm,
or it can go to the back. So the typical angina pain is crushing or squeezing type of pain, or usually tends to happen more with exertion because that's when heart needs more oxygen. So these are the signs that you look for, not like achiness pain or sharp pain in the chest. That is not a sign of a angina or heart pain. It's more like a squeezing sensation. Plus कईयों को chest pain नहीं होता, उनको shortness of breath होती है. Like पहले वो इतनी एक्टिविटी कर सकते थे, अब उतनी एक्टिविटी करने में उनको they get short of breath. तो difficulty in breathing होती है. That could also be the sign of angina or heart attack. कई बार हार्ट रेट बहुत स्लो या बड़ी फास्ट चला जाता है, उसमें आपको फिर लाइट हेडेडनेस होता है, डिजीनेस एज इफ यू गोना फेंट. तो अगर छाती में दर्द हो रहा है, आपको स्वेटिंग हो रही है एंड यू फील लाइक यू गोना फेंट, these are the typical signs of heart attack. You should not wait. You got to call 911. Very, very important. Once you start having symptoms, please do not wait. Because अगर आपको acute heart attack हो रहा है और timely help मिल जाती है, then you can save the heart muscle. And in this case, time is muscle. The more time is going to be delayed for the treatment, you're going to have more damage to the heart muscle. So I want to repeat what you just said. If you are somewhere near that thought कि ये heart disease है, तो 911 कॉल तुरंत कर देना चाहिए. Absolutely, absolutely, and it can save lives. Absolutely. Another thing, before we conclude this conversation, heart disease होए ही नहीं. I mean, that is what we want. तो उसके लिए आप ऑफ कोर्स आपका तो कार्डियोलॉजिस्ट है, आप तो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते, बट यू ऑल्सो वांट कि लोगों को हार्ट डिजीज हो नहीं. सो इन ऑर्डर टू बी इन दैट स्टेट, व्हाट आर द टिप्स? अशोक जी, मैं अपनी बारे में बात करता हूँ कि जब लोग आते हैं हार्ट अटैक के साथ तो हम उनकी टेक केयर करते हैं. इट इज़ सेटिस्फाइंग, you save life, but in the back of my mind, I think maybe I should have done something more for this gentleman to prevent him having a heart attack. So prevention is definitely always better than cure. Or there are studies which have shown approximately 80% of the heart disease is preventable and is in your hands. So उसमें एक तो हम कहते हैं ABC of living healthy heart. So ABC means A is for avoiding smoking, B is for be active, and C is for choose healthy nutrition. These are the ABCs of healthy heart. Time is limited, but Dr. Sahab, you mentioned earlier also diabetes and heart attacks or heart disease also have some relation. Diabetes also is something that you are many times given to believe that because your great grandfather had it, so now you have it. But what this relationship can help us in doing, which would keep us healthy? I'm very happy, Ashok ji, you brought this point up. Out of all the risk factors, the worst one is diabetes. Or diabetes, as we know, there are two types of diabetes. It's type 1 and type 2 diabetes कहते हैं. Yes, as you said, there is some genetic component of it also, especially in type 2 diabetes, but most of it is avoidable if we watch our diet in the form of carbohydrates. जितना भी blood sugar high होता है, that comes from bad carbohydrates. So if you try to avoid those carbohydrates, your sugar will be okay. Sometimes what people do is they say that let me take metformin or something for diabetes, then it'll give me some room to eat something what I want to, but that's something should be avoided. I would rather not take medication and watch your diet more carefully. So now lot of important information with inspiration and insight about staying healthy, staying with a healthy heart in 2016. As we conclude this conversation, one line joke, if you remember, to help our viewers stay away from stress. So I say there's a husband and a wife, they go to their cardiologist.
तो कार्डियोलॉजिस्ट स्टेथोस्कोप लगा के हस्बैंड का हार्ट चेस्ट पे लगा के हार्ट को चेक करता है। तो एज ही पुट्स द स्टेथोस्कोप ऑन, तो वाइफ जो हैं वो अपना हाथ आगे कर देती हैं। तो वो कहता है कि भाभी जी मैं तो भाई साहब का हार्ट चेक करना हूँ छाती में, तो आप अपना हाथ क्यों आगे करते हैं? कहते हैं जी मेरा हाथ चेक करो, तुम्हारे भाई साहब का हार्ट जो दिल है मेरी मुट्ठी में है। तो ऐसी भाभी जी जो हैं वो उनको नमस्कार है। अभय जी को स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद के साथ नमस्कार। और इस कार्यक्रम में बने रहकर आपने जो एक हेल्दी ढंग से 2016 को अपनाने की बातचीत में मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।